Hello and welcome to the Cricket Next YouTube channel. My name is Kanan Bari. I am here with yet another discussion and this time on India's next T20I captain. वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है, इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुकी है. उसी के साथ इंडिया के जो T20I कैप्टन रहे हैं बहुत टाइम से, रोहित शर्मा, उन्होंने अलविदा कह दिया है T20I फॉर्मेट को. एंड नाउ द फोकस इज टुवर्ड्स द नेक्स्ट T20I कैप्टन. शुभमन गिल ने कैप्टनसी जरूर करी जिम्बाब्वे सीरीज में, बट इट वाज बिकॉज द सीनियर प्लेयर्स वर नॉट देयर. द हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव वो नहीं थे, इसलिए गिल को कैप्टनसी करनी पड़ी. अब सवाल ये उठता है, क्या हार्दिक पांड्या, जिनको देखा जा रहा था एज अ नेक्स्ट T20I लीडर आफ्टर रोहित शर्मा, क्या वो ही कैप्टन बनेंगे, या जो रिपोर्ट्स में नाम चल के आ रहा है सूर्य कुमार यादव को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है. इसी में बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं साहिल मल्होत्रा एंड वी विल डिस्कस इन डिटेल who can be India's next T20I कैप्टन. साहिल, बहुत रिपोर्ट्स आ रही हैं, हार्दिक पांड्या को फैंस ने भी और सबने यही सोचा था कि मे बी ही विल बी द नेक्स्ट कैप्टन, क्योंकि वही चलता आ रहा था, रोहित के एब्सेंस में वही लीड कर रहे थे. लेकिन अब क्या सूर्य कुमार का नाम भी आगे बढ़कर आ रहा है? इफ यू कैन गिव अस सम इनसाइट्स इनटू दिस डिबेट. I think very interesting turn of events, Kanav. As you rightly said, Hardik was considered the natural successor to Rohit Sharma because in Rohit's absence before the T20 World Cup, when Rohit, Virat, all these players weren't playing the shortest format, Hardik Pandya was leading the side in white ball competitions, whether it's ODIs or T20s. And, there were strong indications from the BCCI too, because T20 World Cup, Hardik was Rohit's deputy. Even before that, on numerous assignments, Hardik was as Rohit's deputy. He led Mumbai Indians in the IPL two seasons. He led Gujarat Titans in the IPL, one to the final, one both to the final, one to the title, and one where they ended up as the runners-up. So, sab aisa hi lag raha tha, but now Sky has emerged as another candidate. I wouldn't say that he has been confirmed because it is not as straightforward as it looks like, right? You're making a captain for the future, and you can't take that decision overnight. And you can't just say कि यार ये fit नहीं है, इसको हटाओ, इसको ले आओ. He's more fit. It just doesn't work like that in the BCCI. A lot of factors will be considered, a lot of pros and cons will be considered, and that it's going to be a tight race. But no way at this point we can say that X is a favorite or Y is a favorite. I think it's still hanging in the balance, and it will be very premature to rule Hardik Pandya out of captaincy race because again, I don't think he has done anything wrong. ODI वर्ल्ड कप में भी जो उसका इंजरी हुआ था उसमें कोई फिटनेस कंसर्न का बात नहीं था, और उसके बाद अगर आप देखोगे आईपीएल के मैचेस तो ये सूर्या से ज्यादा खेला है बिकॉज सूर्या मिस्ड इनिशियल फ्यू गेम्स ड्यू टू हिज रिकवरी व्हिच टुक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड. सो आई एम नॉट सेइंग बोथ ऑफ देम हैव एनी कंसर्न्स और व्हाटसोएवर. आई थिंक बोथ ऑफ देम आर गन प्लेयर्स इन द फॉर्मेट. They have done a lot of good for Indian cricket in white ball, for Mumbai Indians as well in the IPL. So both are strong contenders. But I would say let's leave it there and let's wait for the selectors to make that official confirmation today evening when they sit to pick the squad for 3 T20s and 3 ODIs versus Sri Lanka. Absolutely. और साहिल, पर्सनली व्हाट डू थिंक, व्हाट हैज लेड टू दिस पॉइंट दैट हार्दिक पांड्या को कंसीडर किया जा रहा था? क्या लगता है सूर्य कुमार यादव में ऐसा क्या देखा गया है कि ही कैन बी अ बेटर लीडर देन हार्दिक पांड्या? एंड आई एम आस्किंग ऑन इन पर्सनल कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू यू हैव बीन फॉलोइंग द गेम सो क्लोजली. क्या सूर्य कुमार यादव में वो है टू बी इंडियाज नेक्स्ट T20I कैप्टन लीडिंग इनटू द T20 वर्ल्ड कप 2 years डाउन द लाइन? सी कना, अभी इसमें सैंपल साइज बहुत कम है हमारे पास. अगर आप देखोगे जैसा हार्दिक के साथ भी था कि जब हार्दिक को कप्तानी दी गई गुजरात टाइटंस की तो हार्दिक भी इतना कैप्टनसी कर नहीं आया होता. सेम विद सूर्या, ही हैज लेड मुंबई इन द डोमेस्टिक सर्किट. एज ग्रुप लेवल पे भी here and there have been appearances for corporate sides as well. He led India when Hardik wasn't available, Rohit wasn't. I think it was in the T20s against Australia and in the T20s against South Africa if I'm not wrong. So सूर्य ने भी कैप्टनसी करा हुआ है, बट दोनों का सैंपल साइज उतना नहीं है. बहुत 19-20 का अंतर है. एक ने शायद 15-16 गेम्स करे हैं, एक ने शायद 7 गेम्स करे हैं. So there's very little to read into that. Now, what could potentially work in Surya's favor is the fact that, someone like Gautam Gambhir has worked very closely with Surya Kumar Yadav when they were together at Kolkata Knight Riders. People close to Gambhir have told us that even during KKR days, सूर्या को बहुत लाइक करते थे गंभीर, बहुत पुश करते थे, प्रमोट करते थे. एंड इट वाज देयर वेयर स्काई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहां पर वो फिनिशर बने, 10-12 गेंदों के अंदर वो इम्पैक्ट डालते थे. हाँ, एक बड़ा खिलाड़ी वो तब बना जब वो मुंबई गया, but foundation was laid at Kolkata Knight Riders. So all those things could work in his favor. And then I think one more thing, you play a lot of T20 cricket, right? And Hardik has to juggle ODI cricket as well. I'm not saying Surya will not be available for ODIs,
बट ओडीआई के अंदर आप देखोगे अगर हार्दिक बहुत क्रूशियल प्लेयर है चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से, सो मे बी, आई एम जस्ट सेइंग मे बी, वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत मे बी आप चाहेंगे कि हार्दिक सारे T20s ना खेले, इसीलिए आप सूर्या को एक कंसिस्टेंट ऑप्शन कंसिडर कर रहे हैं. बट इवन that argument, that logic doesn't sit well with me. I think if you want a player to lead you, और आप चाहते हैं कि एक वर्ल्ड टूर्नामेंट के लिए आप कैप्टन अभी फ्रीज करना चाहते हैं, so I think that has to be Hardik, and that should be Hardik in my personal opinion, because I don't think he has done any wrong. And rahi baat fitness ki, that fitness is not secret to anyone. NCA strength and conditioning coaches, NCA head of science, and Dr. Nitin Patel obviously have a clear understanding about his body now that they've treated him after that back injury which kept him out of action. And ever since that back injury, I think the only injury which happened to him was that freak incident against Bangladesh. So injury wala narrative I think is very unfair. Let's put the right word out if that has to be the case, कि आप clear reasoning आना चाहिए at least from the BCCI if at all it happens. Otherwise, I'm still very divided on this, and I don't think it's going to be as straightforward as it looks like. Yeah. And do you think captaincy pressure can affect Surya Kumar Yadav's batting? Because we have seen Hardik being the player he is with the captaincy tag, but Surya Kumar mein, do you think leading a side, ek hota hai you are leading in the absence of the main captain, so you are filling the gap, but to lead a proper side into a World Cup, do you think that might affect his batting going forward? See, again, that's what I said, right? अभी sample size इतना कम है कि आप कुछ कह नहीं सकते कि how he would react to captaincy pressure, how he would face that pressure, that media pressure. You have to attend regular press conferences, all that thing. Captaincy, it's just not taking decisions on the field, right? आपको backroom का staff अपना इंश्योर करना है that the coaches and everyone are aligned in the same direction. एक अच्छा माहौल बनाकर रखना है, यंगस्टर्स को साथ में रोप इन करना है. So अभी देखो 2 साल की बात करें, हार्दिक 30 है, सूर्य 33 है. 2 साल के बाद सूर्य 35 होगा, हार्दिक 32 होगा. So बहुत सारी चीजें फैक्टर इन होंगी. तभी मैं बार रिपीटेडली बोल रहा हूँ, इतना सीधा एक लाइन की तरह नहीं है, इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं. क्योंकि अगर इतना सीधा ही होता तो अभी तक आपको श्योर शॉट डिसीजन आ गया होता. Yeah. And lastly, Sahil, when do you think कब तक पता चल जाएगा fans को कि who will be the captain? When will the team be announced? If you can give. I think today evening probably, if all goes well. The selectors, as I said, are meeting today. Most likely it's going to be an online meeting because not all stakeholders are present in Mumbai. So it's going to be an online meeting. So let's see whether they decide to make it official today. But the meeting has been scheduled for today evening. Okay, so by today we'll know who will be India's next T20I captain. At least we'll get a hint today. Thank you so much, viewers. Thank you so much, Sahil, for connecting with us. And viewers, what do you think? Who should be India's next T20I captain? Comment section में नीचे लिखिए. And you can also give the reason why do you think that particular person, be it Surya Kumar Yadav or Hardik Pandya, should be India's next T20I captain. Until then, please take care of yourself and have an amazing day. Thank you.